Okay. Are we live? Yeah, we're live. All Okay. right. So for this session of Work All in Focus, we have a special guest line with us today, Mr. Faheem Sadiq. A little introduction about Mr. Faheem. He's not only a marketing manager in a leading company, but also he's the mastermind behind an African cuisine, bringing innovation into Pakistan, and also is the founder of NGO. Today he's gonna talk to us about digital marketing. Before we start further, can you please tell us how you got into this field? Assalamualaikum. So basically, being a son of an engineer, uh, बचपन से ही I actually saw my father working as an engineer. But when I was in doing my matriculation, so उस वक्त से ही there was that kind of thing, business in my mind कि नहीं यार I have to get into this field कि मुझे अपना business करना है. So when it comes to business, आपका खुद का business होता है तो you think about sales at first. If you think about sales, so that drives profit, right? तो उस सब के लिए marketing जरूरी है. मार्केटिंग जरूरी है तो दैट इज द मीडियम, दैट इज एक्चुअली समथिंग कि उसमें आप कौन सा मीडियम अडॉप्ट करेंगे. उस टाइम पे जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप लाइक 12 years 13 years back, कन्वेंशनल एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग वाज प्रीटी मच इन. ठीक है, और टीवी और उस पे लाइक काफी महंगी प्लेसमेंट्स होती थी और बिलबोर्ड्स एंड ऑल ऑफलाइन मेथड्स एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड्स वर ऑन. बट उस टाइम पे यूएस में और दूसरी जगहों पे खास तौर पे हमारे पास इंटरनेट का उतना पावरफुल एक्सेस नहीं था. बट देन आहिस्ता आहिस्ता व्हेन आई एक्चुअली एंटर्ड इनटू माय ग्रेजुएशन स्टेज, आई गॉट टू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग. सो उस टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग का मुझे सिर्फ यही पता था कि एक फेसबुक है और उस पे कुछ एड्स चलती हैं, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हिच इज नॉट द केस. तो वो तो बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग थी. बट दैट वाज द टाइम व्हेन आई एक्चुअली गॉट टू नो अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, द इनोवेशन, द अपॉर्चुनिटीज एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट the ROI out of it कि क्या है और KPIs किस तरीके से पता चलती है. टेक एग्जांपल कि एक एड होती है, टीवी पे लग जाती है, पता नहीं चलता कि उससे कितनी आई बॉल्स पता चलते हैं, वेग होते हैं, डिजिटल पे इंप्रेशंस जो होते हैं वो ऑन पॉइंट होते हैं. सो या दिस वाज द पॉइंट कि बेसिकली आई एक्चुअली initiated कि भाई डिजिटल मार्केटिंग में एंटर होना है. इट्स ग्रोइंग फील्ड एंड द स्पेक्ट्रम इज टू बिग, still a lot to learn and still a lot to do. So yeah. How did you come up with this idea of bringing something as innovative and different as African cuisine? So the two uniqueness and this which you have actually mentioned, like Funzo. The first uniqueness is that we're just offering African cuisine, authentic African cuisine for the first time in Pakistan, like in K Town, Karachi. हमने Chinese, Italian restaurants यहाँ पे देखे हैं and we've seen people eating them. So मेरे दिमाग में एक चीज ये आई कि should come up with something which is like very unique. ठीक है. So ideation to ye thi, but then we don't have a physical existence. I'm just using the digital methods. We're just using the digital infrastructure to sell as well as to place the product as well as to place the brand. So जो brand है वो digital infrastructure पे है. It's totally operates digitally और इसकी order taking system भी total online है और सिवाय delivery के सारी चीजें online. So it's just like कि ये दोनों चीजें ऐसी थी कि African cuisine और उसका connection के we'll just do it online. Maybe we'll come up with a physical outlet, but a very, very small physical outlet with a huge digital infrastructure. So that was the point. Rather than the other way around, के लोग कहते हैं कि बड़ा physical infrastructure होता है restaurants के पास और छोटा digital infrastructure होता है कि online ordering system बना दिया एक छोटा और या फिर aggregators के through online चले गए. So that is not my point. I want to come up with my own application. I want to come up with my own online ordering system. I want to come up with my own chatbot automation as well. So there's a lot to do. But Abhi, initially
जो दिमाग में था उसको पेपर आइडिएशन से डिजिटली कन्वर्ट कर दिया है. सो वी जस्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम फेसबुक एंड इंस्टाग्राम राइट नाउ, बट there's a lot to do और काफी चीजें हैं जो करनी है. That was very So yeah. interesting to hear. Moving forward, what do you think is the role of digital marketing in COVID-19, especially? So this is going to be a long answer. Basically, so it starts from like the two, three major pointers in this. The first one is that कि देखें जब COVID-19 strike किया तो हमारी इकोनॉमी wasn't ready for that because we were already suffering. तो उसमें हुआ ये कि काफी जो ब्रांड्स जो फिजिकल आउटलेट्स के साथ काम करते थे और काफी सारे आप भी ब्रांड जानते हैं जिनके राइडर्स होते हैं, they started suffering because अगर बिजनेस नहीं होगा तो they'll have to fire them. ठीक है. तो उस वक्त the brands actually thought of coming up with the uh, selling product through digital, through online. ठीक है. अब प्रॉब्लम पहले क्यों नहीं कर पा रहे थे और अब कैसे हो गया, ये वाला जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि पहले हमारे हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट है. दैट्स बिकॉज ऑफ द लॉजिस्टिक्स, बिकॉज जिस तरह से प्रोडक्ट ऑर्डर किया जाता है या जो उसकी प्लेसमेंट डिजिटल ब्रांडिंग होती है, प्लेसमेंट होती है, उसकी साइजिंग सही से नहीं होती, उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड सही से मेंशन नहीं होता. सो व्हेन इट यूज्ड टू रीच एट होम तो वो कोई अलग ही चीज निकल आती थी. So the trust deficit was there, so people were not ready to order. Plus, अगर 2 दिन बोल रहे हैं तो 5 दिन में पहुंच रहा है, तो there was a lot of logistic error involved in this. बट जब आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता ऐसी सिचुएशन में, जैसे कि ईद पे हुआ, जो ईद आई तो उस पे देयर वाज अ लॉकडाउन, देयर वाज नो फिजिकल शॉपिंग अलाउड एट दैट टाइम. तो उस टाइम पे पीपल वर एक्चुअली ऑनलाइन ऑर्डरिंग. ठीक है. तो थोड़ा सा ब्रांड्स ने अपने आप को इम्प्रूव किया, थोड़ा सा लॉजिस्टिक्स ने अपने आप को इम्प्रूव किया और थोड़ा सा कस्टमर्स ने भी अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा के आगे स्टेप लिया. तो दैट्स हाउ लाइक वी मीट टू अ पॉइंट लाइक दिस, बिकॉज थोड़ा कस्टमर चला, थोड़ा वो चढ़े, थोड़ा सा बीच में से लॉजिस्टिक ने काम किया है. तो द ऑनलाइन सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन हैज इम्प्रूव नाउ. मेनी ब्रांड्स आर लाइक मैं जितना देख रहा हूँ उसी की वजह से डिजिटल एडवर्टाइजिंग का एम्बिट भी अब थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है, बिकॉज ये कोविड ने हमें सिखा दिया कि बहुत कुछ, बहुत पोटेंशियल है यहाँ पर भी, अगर आपकी लॉजिस्टिक प्रैक्टिसेस, आपकी डिजिटल प्लेसमेंट्स, आपकी ट्रस्ट डेफिसिट को जो चीजें फेस कर जो बेसिकली जिन चीजों की वजह से ट्रस्ट डेफिसिट आता है, अगर आप उन चीजों के ऊपर काम करेंगे तो then there's a lot of potential you can see in digital and online selling. अब दूसरा वाला जो पॉइंट था कि उसकी वजह से बिजनेसेस ने जो उस टाइम पे सफर कर सकते थे उन्होंने उतने हद तक सफर नहीं किया, बिकॉज देयर वाज क्लोथिंग ब्रांड्स दे वर सेलिंग ऑनलाइन. ठीक है. यहाँ तक कि अगर आपने बेसिकली ईद को घर पे मिठाई भी मंगवानी है तो वो भी बेसिकली दे वर सेलिंग ऑनलाइन. सो रमजान के पूरे आखिरी के दिनों में लाइक व्हेन देयर वाज लाइक पूरा आपका फिजिकल जितने आउटलेट्स हैं वो सारे एंगेज होते थे उस टाइम पे, बट इस दफा नहीं हो सके बिकॉज एसओपीज फॉलो करनी थी. तो ऑनलाइन के साथ साथ जो है वो लोगों ने उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ के सीख भी लिया. जो फॉर इंस्टेंस के पीपल हु आर ऑफ लाइक 40-45 years of age, उनके लिए सबसे आसान जो चलाना है वो व्हाट्सएप है, या फिर उसके बाद यूट्यूब है, या फिर फेसबुक होगा. बट व्हेन दे एक्चुअली गेट टू नो कि अच्छा ये फेसबुक पे इधर क्लिक करने से इधर राउट कर देता है, अच्छा उधर ये फॉर्म इस तरीके से भर सकता है, सो दे गॉट टू नो कि अच्छा यहाँ से इस तरह से ऑनलाइन ऑर्डरिंग हो रही है. फिर आपके पेमेंट मेथड्स इस कोविड में काफी ज्यादा जो है वो पीपल एक्चुअली गॉट यूज्ड टू इट कि ऑनलाइन ऑर्डरिंग में ऑनलाइन पेमेंट्स कर दी, पेमेंट गेटवेज को सीख लिया, पेमेंट मेथड्स को किस तरीके से यूज करना है सीख लिया. सो देयर इज अ लॉट वी इम्प्रूव इन कोविड, बट देयर इज अ लॉट जो थोड़ा सा बेसिकली जो लॉस बड़ा हो सकता था वो इन कंपैरिजन छोटा हुआ. तो या What obstacles do you think you faced while entering this field of marketing? Like, what struggles do you think are the most that you had to see, overcome? when you talk about the obstacles, there are obstacles of like entering. Whenever you think of entering into a field, you have obstacles, you have opportunities. So you have asked about the obstacles. So obstacles में सबसे पहला ये है कि डिजिटल मार्केटिंग में बोला ये जाता है हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से there's a lot of competition.
there's a lot of competition in people doing it, and there's a lot of competition when people are on the same platform. So like, if I'm a food brand and someone else is a food brand and selling same thing, so there's a lot of competition head to head. Yeah. So उसके अंदर एक ऑब्स्टिकल एज अ डिजिटल मार्केटियर या फिर एज अ ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट ये आता है कि आपको कंपैटिटर को, अपने क्लाइंट के कंपैटिटर को या खुद अपने कंपैटिटर को इस तरीके से देखना पड़ता है कि आपने ऑन पेज स्ट्रेटेजीज क्या फॉर्म की हैं. सो वेन एवर यू स्टार्ट विद द ऑन पेज स्ट्रेटेजीज, मतलब पेपर पे आपने जो अपनी स्ट्रेटेजीज लिखी हैं उसको डिजिटल पे किस तरीके से लेके जा रहे हैं. सो देयर इज ऑलवेज अ जर्नी फ्रॉम पेपर टू डिजिटल. तो ये एक ऑब्स्टिकल आता है कि उस टाइम पे यू फेस हेड टू हेड कंपटीशन. सो दिस इज नॉट इजी टू डू इट. दूसरा जो एंट्री उस टाइम पे ये बताया जाता है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है, everyone is doing it, there's a lot of agencies and who are doing that and this. बट मुझे ये लगता है कि अभी भी हमारी यूथ में से लाइक 80 to 90% लोगों को डिजिटल सीख सकते हैं वो. there's an opportunity for them to learn digital. There's a lot of scope in this. It's just like you learn digital today, something in digital today, कल वो नई चीज डिजिटल में एक और आ जाती है. तो मैं कभी भी उस मार्क को रीच नहीं कर पाता that I become a complete digital marketer. So if I learn something today, tomorrow there will some other method as well. Because digital is not a name, it's not a technique, it's basically a medium. Okay? And there are different techniques. So you learn one, there's a new one coming in. So you learn the second one, there's a third one coming in. So the mark is never reached. तो ये वाला एक ऑब्स्टिकल आता है because you cannot be complete digital marketer at any stage. बट हाँ, ये जरूर है कि हमारे पाकिस्तान के हिसाब से कुछ प्लेटफॉर्म्स जो हैं, जो चार तो बेसिकली फिंगर टिप्स में हैं सोशल मीडिया के अंदर, लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये तो बेसिकली काफी ज्यादा ही अडॉप्टेड हैं अभी. इसके अलावा जो आपकी बेसिकली डिजिटल एसईओ, पीपीसी और जितनी भी डिजिटल टेक्निक्स हैं, वो एक और गूगल का गेम है. फिर ऑटोमेशन है, फिर उसके बाद अब एआर का, ऑगमेंटेड रियलिटी का कॉन्सेप्ट है. एज आई मेंशन कि बेसिकली you can not reach to the mark. So you cannot say it's obstacle, but it's actually something like, you have to keep yourself engaged in the learning process if you want to be a digital market, up to mark digital marketeer. ठीक है, अगर आप ये देखते हैं कि मैं दुनिया का up to digital marketeer रहूं, so उसके लिए आपको you have to keep the learning process, be very active, and you have to keep yourself aligned with what's happening in the world. Because for a marketeer, it's not local marketing. For a marketeer, it's global. Okay? It's a global village. So you as a Pakistani can work in US. You as a Pakistani can work for UK client. You can actually utilize the Upwork, Fiverr kind of platforms to go and work for, like, there's a whole world out there. So this is the thing. उसी की वजह से जब उस platforms पे जाते हैं तो you face one more obstacle, and there is the international competition. So there's a competition from, like, the neighborhood countries, India, Nepal, Sri Lanka, people working from there, like hell of an agencies over there. और उसके बाद फिर जब आप उस तरफ का यूरोप की तरफ आप देखेंगे तो क्लाइंट वहीं से बेसिकली ये लोग सब अपनी पिच कर रहे होते हैं. जो मेजर बेसिकली ऑब्स्टिकल है जो मुझे उस टाइम पे फेस किया, फिर थोड़े अरसे में सही हो गया, वो ये था कि डिजिटल की डेफिनेशन मुझे गलत बताई गई. मुझे ये बताया गया कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, डिजिटल मार्केटिंग होती है. ऐसा था नहीं. उसका पार्ट था कि वो लाइक सोशल मीडिया. आज भी ये मिसकॉन्सेप्शन बहुत सारे लोगों को होता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है. तो सोशल मीडिया मार्केटिंग इज पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. सो उसके एम्बिट के अंदर आता है. सो दिस वाज वन ऑब्स्टिकल, द मिसकॉन्सेप्शन. जब वो क्लियर हो गया तो आहिस्ते आहिस्ते सारे ऑब्स्टिकल्स उसके बाद फॉलोड बाय एक पे मैंने काम कर लिया. So I kept learning about it and आहिस्ते आहिस्ते वो सारे सॉर्ट आउट हो गए. So yeah. Also, marketing is a field जहाँ पे बहुत सारे entrepreneurs they're trying to enter this field. So, what do you think are the most important ideas and concepts that they need to know before and they enter this field? So wherever you're talking about business entrepreneurs, and when entrepreneurs enter into field, उनकी बड़ी एक study होती है about like everything, about like what can go right and what can go wrong, what can be the opportunities and what can be the failures that can be faced. ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, strength होती हैं, weaknesses होती हैं हर business और हर industry की भी. तो ये तो बेसिकली आप चाहे ऑफलाइन बिजनेस करें या ऑनलाइन बिजनेस करें,
बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, ये तो आपने एक जनरल चीज है जो आपने करनी है। तो फर्स्ट लर्न अबाउट द इंडस्ट्री या यू आर एंटरिंग, ठीक है, कि वो इंडस्ट्री बेसिकली एक्ट किस तरीके से करती है, किसी भी टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस में उस इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट क्या आता है, और अगर कोई इस तरह का फेस्टिवल्स आते हैं तो उस फेस्टिवल्स में उस इंडस्ट्री को कितना इम्पैक्ट आता है, एज एन लाइक पॉजिटिविटी कितनी आती है इसके अंदर, कितना स्पाइक आता है सेल्स के अंदर, ठीक है। सो ये सारी चीजें तो पहले आपने ये ऑफलाइन में भी हैं, ऑनलाइन में भी हैं, यू नीड टू वर्क ऑन देम बेसिकली। अच्छा, फिर आता है फेलियर वाला पार्ट, जो थोड़ा सा दर्दनाक है और हर एंटरप्रेन्योर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। यू कैन नॉट बी अ गुड बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर इफ यू डोंट थिंक अबाउट लॉसेस, ठीक है। सो यू हैव टू थिंक अबाउट लॉस, ठीक है, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट, लाइक एक चीज अगर प्रॉफिट है तो एक लॉस भी है, ठीक है। तो फिर अगर आप उसको डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स के थ्रू यू ट्राइंग टू पिच एंड यू आर एन एंटरप्रेन्योर, तो उसमें आपने एक पेपर आइडिएशन करनी है, यू हैव टू ड्रॉ फ्यू थिंग्स ऑन अ पेपर, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को आपको लेकर जाना है डिजिटल, कि अगर मैं किसी से ये बात कर रहा हूँ, अगर मेरे सामने कोई बैठा हुआ है और मैं अगर उसको ये अपना बिजनेस बता रहा हूँ, तो मैं उसी तरीके से ये बिजनेस कम्युनिकेट, जिसको हम अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी कहते हैं, आप लोगों के पास भी होगी। तो जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी होती है उसके अंदर यही होता है that you actually write down the pointers that how you will talk to the potential clients or customers, ठीक है, या आप अपने बिजनेस को किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, how would people know if I'm selling like African cuisine somewhere, ठीक है, how would people know that what I'm selling, ठीक है, because the dishes are hell difficult, the names of the dishes are hell difficult, people don't know how it will taste. I'll have to tell them, ठीक है, and how will I tell them? I'll have to ask my chef that, okay, just let me know. So I'll write it on the paper. When I'll write it on the paper, I'll actually work on it, the ingredients and everything, and then I'll communicate it to my customers, my potential customers. So that's how you do it. You actually start it with a paper. First, you understand it yourself. Then you actually visualize. Okay, मेरे सामने कोई बैठा हुआ है, मैं उससे बात कर रहा हूँ, और मैं उससे किस तरह से उसको वो चीज समझाऊंगा, मुझे उसी तरीके से वहां भी कम्युनिकेट करना है। So that's how the digital communication strategy moves, ठीक है। तो ये एक एंटरप्रेन्योर के दिमाग में ये चीज पहले होनी चाहिए। दूसरा, टेस्ट एंड ट्रायल मेथड्स होते हैं बेसिकली। वो ये होते हैं दैट आप ए बी टेस्टिंग करें, इफ यू गो विद ए एंड it goes right, if it doesn't go right you go with B, so they're just come up in layman language में backup plan भी कहते हैं। So you come up with like two strategies, not one, ठीक है। If one fails you'll be hell disappointed and then you will tend to leave, ठीक है। तो आप शुरू में ही थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा कि you come up with like two ways, this goes right, if it goes right, okay, continue with this. If it doesn't go right, you can go with the other one as well. So ये एक एंटरप्रेन्योर के लिए जरूरी है कि वो दो रास्ते, लाइक टेस्ट एंड ट्रायल मेथड के ऊपर चले, ए बी टेस्टिंग करे अपने बिजनेस प्रोजेक्शंस को, जब उसने बेसिकली जो भी केपीआई सेट किए हैं तो उन केपीआईज को देखते हुए उसको पता चल जाएगा कि लाइक इफ द ए मेथड वेंट राइट और नॉट। और जो आखिरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि you people in Pakistan, when you're actually trying to communicate something, जो communication strategy भी मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पाकिस्तानी कॉम is not like we don't find good readers over there, not like कुछ तो हैं but not all of them, ठीक है, या मतलब मेजोरिटी उतनी नहीं है जो वेस्टर्न वर्ल्ड में होती है, ठीक है। तो फिर आई एम नॉट अ गुड बुक रीडर, आई कैन रीड ब्लॉग्स बट आई कैन नॉट बुक लाइक दिस थिक बुक्स, आई कैन नॉट रीड दैट। सो उसकी वजह से जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो पोस्ट आता है, बड़ी लंबी लंबी उसके अंदर चीजें लिखी हुई होती हैं, पीपल कैन रीड, दे डोंट रीड इट। हाँ, अगर वो क्रिएटिवली स्ट्रांग होगा, वो आर्टवर्क बहुत स्ट्रांग होगा। इसी की वजह है कि हमारा ट्विटर और लिंक्डइन जो है वो तो उस पर इतना ट्रैफिक नहीं है जितना इंस्टाग्राम पे है, बिकॉज you see, get to see like pictures, visuals, तो उधर है। हमारे like people over here are not that much interested into read like content thing, because they just want to see the pictures and they get the idea कि अच्छा ये क्या है। So just take another example. uh, for my NGO, if I like put an artwork, I put an artwork somewhere कि स्कूल जा रहे हैं बच्चे, ठीक है,
And I'm actually like telling people that I am actually making them go to school with the help of you people, and like education is important for all. ठीक है, तो हम तस्वीर के थ्रू कम्युनिकेट कर दिया, and people are pretty much like understanding that. अब इसका केस टू जिसका मैं कह रहा हूँ कि वो नहीं हो सकता यहाँ पे, कि मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ, छोटी सी तस्वीर लगाता हूँ, एक पैराग्राफ लिखता हूँ पूरे उसके सराउंडेड, और मैं लिखता हूँ एजुकेशन इज अ राइट फॉर ऑल, children should be like all the education standards should be the same. ठीक है, blah blah, इस तरह से मैं बड़ा लंबा सा लिख देता हूँ, you should contribute towards the society by making them go to the school and like promoting education should be the same for all, and like a lot of like maybe I'll enjoy writing that, but like I don't think कि वो digital पे like लोग उतना पढ़ना, सब ज्यादातर majority की बात कर रहा हूँ. So this is the thing. So if you think about like ये तो मैंने एक example दी थी like a non-profitable work. But if we talk about profits, and you are being an entrepreneur entering into the digital world, utilizing the digital medium, don't go with much content. Or mix like creative copies, like कम हो but catchy हो. तो ये सारी चीजें हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए. Being an entrepreneur, strategy, test and trial method, communication strategy, uh, prof loss ka jazba, all of these. Yeah. And what do you think, as you said a lot of important concepts, आपको क्या लगता है कि digitization क्यों इतनी important है, especially in this day and age? It's very important. It's very, very important. एक तो ये है कि it's just like to cope up with all these like हमारे पास जो चीजें, जो methods हैं, it's like टाइम सेविंग वाली जो चीजें हैं, वो काफी आपको याद होगा पहले जो कुछ इस तरह की चीजें होती थी जो डिजिटाइज नहीं होती थी, तो उसमें इतना टाइम लग जाता था, बट नाउ वी यूजिंग डिजिटल प्रोसेसेस तो बड़ा जल्दी हो जाता है, चीजें जल्दी हो जाती है. एक टाइम सेविंग वाला फैक्टर तो है ही. The other factor is if you're talking about the ambit of advertising, तो मैं उसमें तो ये देखता हूँ कि basically results आप gauge कर सकते हैं. You actually get to see the real results. You actually get to see कि basically lead कहाँ से आई, कहाँ से बंदा था, impressions कितने आए, ठीक है. अगर हम marketing की बात करें, वैसे अगर overall digital, तो just like human errors किसी भी businesses में हो जाते हैं, उनकी कुछ ना कुछ परसेंटेज होती है, बट बॉट्स डोंट डू मिस्टेक्स. ठीक है, बॉट्स व्हेन दे आर ट्रेन्ड दे डोंट डू मिस्टेक्स. तो जब आपका कस्टमर, एक चीज होती है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सीआरएम. सो लाइक द होल वर्ल्ड यूजेस बॉट्स फॉर सीआरएम. ठीक है, तो जब आप रात के 2 बजे भी लाइक किसी उस पे वेबसाइट पे जाके मैसेज करते हैं या मैसेंजर पे वो भेजते हैं, तो द बॉट रिप्लाइज देन एंड देयर, retains you, that मैं किसी और के पास नहीं जाऊंगा शायद उस टाइम पे, बिकॉज मुझे बॉट जवाब दे चुका होगा. पहले क्या होता था कि पहले वेबसाइट तो बहुत पहले आ गई थी, तो वेबसाइट तो थी, सो लाइक पीपल यूज्ड टू गो विजिट द वेबसाइट एनी टाइम. उस टाइम पे बंदा मौजूद ना हो, क्योंकि ह्यूमन उस वक्त तो बेसिकली पीछे ह्यूमन सपोर्ट थी, अब तो बॉट्स हैं, तो उस टाइम पे जवाब शायद ना आए. तो आई वाज इन अ हरी एंड आई वेंट टू left the website and went to the competitor or someone else doing the service or selling the product. तो एक तो ये डिजिटाइजेशन ने कर दिया कि टोटल ह्यूमन डिपेंडेंसी से निकल कर हम थोड़ा सा वी हैव मूव टुवर्ड्स लाइक द बॉट ऑटोमेशन एंड बेसिकली द बॉट सपोर्ट. ठीक है, फॉर सीआरएम की बात कर रहा हूँ, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की. ठीक है, इसी तरीके से डीबीएमएस लाइक द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डीबीएमएस में पहले होता था to hire people like वो एक्सेल में डाले जा रहे हैं, डेटा डाले जा रहे हैं, डेटा डेटा एंट्री ऑपरेटर समथिंग लाइक उस टाइम पे होते थे, अभी भी होते हैं, यहाँ तो होते हैं, बट लाइक the world in like the western world, all the data is actually recorded through automated systems now. I think you're doing one session on cloud engineering as well. ठीक है, so वो उस सेशन में you'll get to know, ये वाला सवाल उठाइएगा वहां से कि how do DBMS connect to cloud. ठीक है, and how do cloud engineering plays a vital role in this. ठीक है, so ये वाला पॉइंट उससे उठाइएगा जब भी सेशन करें उसके ऊपर. So it goes like this कि वो DBMS वाला पॉइंट भी is like sort much because of this,
कि डेटा आपका एक जगह गैदर होता है, फिल्टर्स लगाते हैं उसमें, यू आस्क बॉट टू परफॉर्म सच टास्क, वो ऑटोमेटिक मैसेजेस चले आते हैं, ईमेल्स चले आती हैं, आपको पता ही नहीं चलता, आप लाइक सिटिंग लाइक समवेयर इन अ कैफे एंड यू डोंट नो कि वहां लाइक इतनी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, बिकॉज़ इट वाज ऑल प्रोग्राम. So this is what digitization does. Okay, you don't know, you have actually uh, programmed the task, you've given a task to the bot, and you're doing something else, you like maybe sleeping and chilling somewhere. Okay, but bot ने in the meantime basically सारी job perform कर दी, then your job hasn't like stopped. ठीक है, so that's how digitization moves. ये बहुत important चीजें जो अब basically हो रही हैं. प्लस एडवर्टीजमेंट आप देखते हैं, किसी वेबसाइट पे जाते हैं कॉन्टेक्चुअल हिस्ट्री के हिसाब से, इफ मैं ये स्पोर्ट्स की, अगर स्पोर्ट्स की वेबसाइट पे ज्यादा जाता हूँ, मुझे उस पे आके एड्स दिख रही है मेरे मतलब की, फॉर इंस्टेंस एक क्रिकेट बैट की मुझे पिच हो रहा है, एक बैनर चल रहा है, तो वो उस पे आके चल रहा है. तो दिस द रेफरेंस लाइक दे कैन नॉट शो कि मेरा, फर्स्ट करेंगे अगर कोई डॉक्टर है एंड इज गोइंग टू लाइक विजिट सम मेडिकल वेबसाइट, उसको क्रिकेट का बैट दिखा रहे हैं, इररिलेवेंस. ठीक है, वो अब चीजें इतनी इम्प्रूव हो गई कि आप रेलिवेंट इंसान को दिखाते हैं. पहले आप ऐड चलाते थे टीवी पे, ठीक है, टीवी पे ऐड होता था ऑलपुरुष का या किसी भी बड़े ब्रांड का, तो चौकीदार भी देख रहे हैं. मतलब अगर उस टीजी को नहीं दिखा रहे तो वो तो बेसिकली आपका आई बॉल वेस्ट हो रहा है ना. तो अब बेसिकली डिजिटाइजेशन के थ्रू यू गो टू द राइट ऑडियंस, यू डोंट गो टू लाइक अ लॉट ऑफ broad audience, but you go to the narrow audience. That's the point. Yeah. And what do you think is the future of digital marketing, especially Mm. after COVID-19? Oh yes. You're talking in terms of Pakistan, or you're talking in terms of like the whole world. Pakistan, Pakistan. Pakistan, it's like a lot is going to be improved now because see, जो आपका तीसरा या चौथा क्वेश्चन था, like how digital marketing played a role in COVID-19. This is actually related to this. So उस अब जो जो स्कोप होगा, जो वो होगा, वो यही होगा कि सारे ब्रांड जो ऑफलाइन थे, बिरयानी वाले भी थे, मैं आप देख रहा हूँ कि वो भी ऑनलाइन आ गए. ठीक है, तो वो आएंगे, दे विल स्टार्ट विद फेसबुक, इंस्टाग्राम करेंगे, ऐसा 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 करके लाइक अपने उसको किसी, अपनी बिरयानी को किसी कंपनी के एम्बेड के अंदर लेकर आ जाएंगे कि हम तो ये द बिरयानी को है. ठीक है, और फिर उसके बाद लिंक्डइन पे भी आ जाएंगे, सो लाइक फिर ट्वीट भी करेंगे उससे. सो दे विल एक्चुअली, फिर वो स्नैपचैट पे भी आएंगे, फिर दे विल एक्चुअली यूज लाइक जो भी सारे टिकटॉक पे भी आ जाए शायद. तो फिर दे विल यूज द जीडीएन डिजिटल, द गूगल डिस्प्ले बैनर्स. ठीक है, तो गूगल डिस्प्ले नेटवर्क पे भी दिखा देंगे. ठीक है, सो they'll keep doing things now, but like agencies keep pitching them, but like वो होता यही है कि फेसबुक इंस्टाग्राम पे एक ह्यूमन साइकी है, जिस पे इंसान जो प्लेटफॉर्म खुद यूज कर रहा होता है ना, तो उसको उस पे एडवर्टाइज चलाना भी अच्छा लगता है, बिकॉज लाइक वो खुद यूज कर रहा होता है. So if someone is not using LinkedIn, this is not a corporate guy. It's like someone is a corporate guy and he starts with like comes up with a venture or something. He will love to go to LinkedIn for advertising, though it's very expensive. ठीक है, बट फिर भी किसी तरीके से ऑर्गेनिक पे तो कर ही लेगा, इनऑर्गेनिक पे नहीं करेगा, तो पेड नहीं करेगा तो ऑर्गेनिक पे कर लेगा. बट जो लोग वो वाले बिजनेस वेंचर्स चलाते हैं, लाइक बिरयानी को, अगर XYZ, मुझे नहीं पता कोई है बिरयानी को या नहीं, बट अगर कोई खोलता है तो लाइक वो इस तरह की चीजें स्टार्ट करेगा, आहिस्ता 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 प्लेटफॉर्म्स आगे बढ़ेंगे. फिर सिमिलरली जो फिर उनके मेथड्स भी डिजिटाइज होने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि फिर ऐप आ जाएगी, बिरयानी को की ऐप आ जाएगी. ठीक है, आई डोंट नो, आई एम गिविंग माइलेज टू अ ब्रांड और समथिंग, मुझे नहीं पता ब्रांड बिरयानी को कोई है या नहीं, बट XYZ कंपनी जो है वो कोई ऐप ले आएगी. ठीक है, और फिर ऐप लाने का तो बोलेंगे ऑनलाइन ऑर्डरिंग. फिर वो बोलेंगे कि अच्छा भाई, आपका जब जब राइडर आता है तो उस राइडर से डायरेक्टली, जैसे करीम और उबर के वालों की ऑनलाइन चैट हो रही होती, तो ऑनलाइन मैसेंजर लेके आ जाए, तो देयर इज लॉट विल हैपन. लाइक फिर वो समझे कि अच्छा भाई, चैट तो बॉट से हो रही थी, खाना राइडर ला रहा था. तो लाइक एक बहुत ज्यादा चीजें हो सकती हैं. There can be advancements. There was this guy who's telling me that he's coming up with a thing. जो बाहर मैंने I've seen this concept in Dubai. There like people using the interactive screens to buy things like in the basement of shopping malls. So ये वाली चीज, there's this guy doing this in Karachi as well.
So you don't have to go into crowdy, like, places and like shopping malls or like, superstores and all that. What he's doing is that you are going in a basement, like maybe in a shopping mall. And you don't want to be in a hassle कि मैं उस एक मार्ट के अंदर भी घुस जाऊँ, like if people surrounded by like, trolleys and all that. ठीक है, तो वो क्या है कि वो इंटरैक्टिव स्क्रीन पे आपने वो किया, यू चूज द प्रोडक्ट्स, ठीक है, यू पे बाय लाइक एंटरिंग द कार्ड नंबर और समथिंग, ठीक है, और नीचे से वो आपके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, आ गए, आपने अपनी गाड़ी ट्रंक में डाला, go, ठीक है. सो दिस इज कमिंग ओवर हियर. सो इतने तो तक तो हो रहा है, ठीक है. फिर उसके बाद लाइक जिस तरह से मैंने बताया कि ब्रांड्स अपने आपको, अब गवर्नमेंट का भी तो जो बेसिकली ट्रेडिशनल पाकिस्तान है, दे आर डूइंग द सेम फॉर एक्सटर्नल इंटरनल मैटर्स बोथ. For internal practices, all the DVMS, all the track records, taxation, bills, maybe शायद जो कर्जा है वो भी शायद उसी में रिकॉर्ड हो रहा हो डिजिटल. But the external things as well, like public dealing, Nadra, all digitized, passport, all digitized. So it's, they're doing it, they're building it. ठीक है. So आहिस्ता आहिस्ता जब अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो they're doing it. Uh, Impressive work also is done in the category of like external and internal dealings जो भी है उनकी, और data recording जो भी है. इस तरीके से प्राइवेट सेक्टर तो कर ही रहा था हमेशा से, और वो भी अब कर रहा है. एक और जो एक बड़ी लेमैन वाली चीज है, वो मैं सोचता हूँ लोग लाइक आसान हो जाता है समझना, कि पहले होता था आपने एक जगह है किसी बिल्डिंग की, उसमें बड़ी अच्छी लोकेशन है, वहां से बड़ा गाड़ियों का फ्लो होता है, बड़ा अच्छा ट्रैफिक फ्लो है, एक बिल बोर्ड लगा हुआ है, 25 दिन तक वही लगा हुआ है, 25 दिन तक मैं रोजाना गो टू वर्क एंड आई सी इट, मैं देख लिया है, ठीक है. सो नाउ the reach is one and the frequency keeps increasing. Okay, 25, 26, 28, ठीक है, जिस मतलब ठीक है, 2-3 दफा के लिए रिकॉल हैमर्स काफी होता है. अब क्या होता है, उधर ही एक स्क्रीन लगी हुई होती है, तो जब मैं एक सुबह जाता हूँ तो वहां पे एबीसी ब्रांड होता है, जब मैं दूसरी सुबह जाता हूँ तो XYZ होता है, शाम को आता हूँ तो कोई और होता है. So that's how it moves. Like अब चीजें उस तरह से स्टैटिक से निकल के like going more towards digital. There's a lot of scope. पाकिस्तान में तो खैर बहुत ज्यादा है. There's a lot of opportunities. जो basically job opportunities हैं हमारे इधर, जो basically job landscape है, वो एक तरीके से अब उस तरह से बढ़ गया, because obviously एक जगह जब बॉट्स इंटरफेरेंस है तो कहीं कहीं जॉब्स आपकी बेसिकली खत्म भी हो जाती हैं उसकी वजह से, बिकॉज वो सारी चीजें बॉट्स टेक ओवर कर लेते हैं. बट उसकी प्रोग्रामिंग के लिए, उसकी इंटेलिजेंस के लिए यू नीड समवन टू डू इट, ठीक है ना. तो if you need someone to do it, then obviously you will actually need the resource, and if you need the resource, that will actually create job opportunities. तो ये भी एक स्कोप है, स्कोप के अंदर है कि डिजिटाइजेशन की वजह से. और ई लर्निंग, जो बेसिकली अब ई लर्निंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, ऑनलाइन अकेडमीज एंड ऑल द वर्चुअल अकेडमीज, तो आप यहाँ से बैठ के बेसिकली you can do a certification from Harvard, from Oxford, ठीक है, यहाँ से बैठ के आप like ऑनलाइन कर लेते हैं, and you get to learn like, पहले क्या होता था, like people used to spend a lot and go to like Harvard गए, वहां से पढ़ा, and people are studying over here, like if YouTube utilized well, it can actually teach you a lot of things, ठीक है. तो ये सब डिजिटाइजेशन लर्निंग के उसके अंदर भी हो रहा है. somewhere like home entertainment, that's how like Netflix is operating right now. So a different content, people sitting at home in like times of COVID, एक अलग home entertainment वाली industry शुरू हो गई. Maybe like Pakistan comes up with like their own Netflix kind of thing also, maybe. So excuse me. So yeah, so बहुत बड़ा scope है, and we'll see things coming. We'll see things coming, and we'll see things like happening. Yeah. So, what do you think is next for you? Like, what do you have lined up? Uh, Pretty basically it's like a list of things, but the first I mentioned in the beginning is like about Funzo, the digital transformation of it and using the Orion. There's a lot of investment involved in it, so I do it like slowly and gradually. But yeah, so that's first in the list, because I think
that I should actually set an example like of how to do it and how it's actually going to make a difference. So we're just working on it. अभी बहुत like वो पेपर आइडिएशन है. I'm not sure कि मैं कोई यूनिक चीज करने जा रहा हूँ वो पहले उस वक्त हो चुकी होगी. But अभी तक like I think that's going to be something different and going to be something which is already being done in like in the Western दुनिया में तो पहली बार नहीं हो रही होगी. But maybe शायद पाकिस्तान में या शायद क्लोज इनफ कुछ कोई ना कोई कर रहा होगा. तो एक ये प्लान है. और दूसरा बेसिकली आई थिंक ये शुड लाइक एक 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 एकेडमी है basically, or so I'm just thinking to actually teach all these kind of things with them. And like they've just started with the name of Or Academy. तो उनके साथ कुछ चीजें चल रही हैं. तो ये वर्चुअल जो बेसिकली आपकी डिस्कशंस होते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और प्रोफेशनल बेसिकली दे ऑफर प्रोफेशनल कोर्सेज. बट इट्स नॉट लाइक वो वाले कन्वेंशनल प्रोफेशनल कोर्सेज जिसके अंदर आप लाइक बैठ जाते हैं और आप ये स्टूडेंट्स आर यॉर्निंग एंड लाइक टीचर ने अपना कोर्स खत्म करा. ठीक है, वो वाली चीज नहीं है. वो बेसिकली सर्टिफिकेशन टाइप तो है, बट वो ये है कि अभी engage with like students, you actually like you don't actually stand like this on the podium and the people are sitting in front of you, they're sitting beside you, so you're actually like talking to them like this. So like a different teaching technique and maybe a different learning process. उससे थोड़ी चीजें वो आपको सिखा जाते हैं, थोड़ी चीजें आप उनसे सीख लेते हैं. तो जब आप पोडियम के पास जाके खड़े होते हैं तो आप एक डिफरेंस उधर ही खड़ा, डिफरेंस तो है ही ऑब्वियसली. a teacher is something very like a respectful and that kind of personality. But जब आप इस तरह के वो हमारा वो वाला जो और एकेडमी का बेसिकली वो जो है वो तो बेसिकली वो है इसी तरीके का कि आप उस तरह से बिल्कुल सामने बैठ के एज लाइक सोशल वाली जो होती है ना, बिल्कुल सोशलाइज करें एंड यू टॉक अबाउट लाइक जनरल थिंग्स, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस तरह से दुनिया में क्या हो रहा है, फ्रीलांसिंग किस तरह से, बहुत कैजुअल एंड सोशल. ठीक है, तो that's how our academy will move. इसमें क्रिएटिव का भी वो है, डिजिटल का भी है. ठीक है, और स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का भी है. ठीक है, तो ये एक एक चीज चल रही है. तीसरा मेरा एनजीओ का, तो हमने फुंजो में जो बेसिकली अब आगे जाके हायरिंग करनी है, तो we'll do particular hiring for orphans. We'll do an hiring program for transgenders as well. ठीक है, तो जो like you don't know, like many transgenders are very educated and like but they don't get the opportunity because they are transgenders, because लोग क्या कहेंगे. So it will fall under the CSR thing, and we'll actually come up with a program for like we'll keep uh, we have spotted like many orphans. We know many orphanages over here in this city, or like KLI, Karachi, or Islamabad. So we'll spot them. We'll involve them in the operations, and we'll actually involve transgenders in the operations, or in the whole strategy formulation, customer service, and CRM and everything. So that's the third thing that's actually I want to do. And there will be also sticking to the topic, I will be also under the ambit of digital, like अगर जो कुछ भी operations में आएगा या जो भी transgender में orphans में जो भी आएगा, we'll actually engage them with like offline and digital business matters both. So yeah, ये तीन चीजें हो गई. चौथी और जो जो बेसिकली इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा मसला रहता है. पीपल आई हैव फेस्ड दिस, बट समटाइम्स आई लाइक कुछ लोग ऐसे नहीं भी होते. People learn things and like people don't want to share the things like the tricks they have found. ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह की कुछ चीजें कभी कभी होती हैं कि obviously people think अच्छा यार इसको ये पता चल गया तो मेरा तो कंपटीशन आ जाएगा आगे. So उस उसको इस तरीके से सोचना चाहिए कि जब उसको ये बात पता चलेगी उस वक्त तक दो आपको और पता चल चुकी होगी. So it keeps happening, and if you will actually if you will teach something to him, you learn something from him. So it's exchange of learning. So ये एक है कि मैं जो भी एकेडमिक वाला जो जो वो है उसके अंदर ये करना है कि उसको किताबी और बुकिश और लाइक तो सारा कुछ मटेरियल ऑनलाइन पड़ा होता है वैसे नहीं करना.
वही मैं बता रहा था कि कैजुअल और उसमें करना है कि you talk about it, you keep sharing stuff, and you talk about you talk with your experiences, you talk with your failures. लोग फेलियर से लाइक मकसद देने की भी कोशिश करते हैं, बट लोग सीक्रेट सक्सेस के सीक्रेट्स नहीं बताते हैं. सो यू एक्चुअली गो विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. यू टीच लाइक दैट अच्छा, अगर जिंदगी में कोई कोई सक्सेस फैक्टर है, कोई चीज ऐसी है जो आपने लगा के अचीव कर ली, उसके पीछे क्या था, किस तरह से करी, वो लोग बताने में मुझे लगता है कि थोड़ी कमी उस पर लाइक बात करते हैं. स्पॉटलाइट कम होती है उस पर. उससे पहले का जो फेलियर होता है उस पर बड़ा एम्फेसिस होता है कि इस तरह से था, इस तरह से था. So yeah, there is if there are obstacles when you said that like digital marketing, there are a lot of opportunities as well, and opportunities are more than the obstacles. It's just like a clear case. You get if there are like five obstacles, you get like 100 opportunities. So maybe like the passion thing, if you think about passion, start एक important point है. uh, start with like don't wait for your graduation, don't wait for your masters कि अच्छा अभी तो मैंने marketing masters कर लूंगा, ठीक है, मास्टर्स करने का बाद start with digital marketing, को उसमें भी कुछ कर लेंगे यार, सभी कर रहे होते हैं, ठीक है. तो don't do this like start with the point when you're graduating, you get the like semester system में 3 4 5 घंटे के बाद you get free, and after doing all this assignment projects and everything you get time. So when you get time, you think about the business idea कि अच्छा यार जब मैं 2 3 4 साल बाद जो ग्रेजुएट हो जाऊंगा, I'll be in the market, उस टाइम पे क्या चल रहा होगा, क्या ट्रेंड चल रहा होगा, क्या बिजनेस चल सकता है, किस बिजनेस को लाइक अच्छे अच्छे नंबर्स मिलते, लाइक दिस थिंग मूव्स ऑन नंबर्स कि कितनी कितने इन्फ्लोज आ रहे हैं. तो उस वक्त से काम करना शुरू करें. Don't wait for like the graduation to end. Don't wait for the masters to end. उसके बाद फिर जाकर like अब start करेंगे. अब सोच लेते हैं, अब डिजिटल में एंटर हो जाते हैं, फिर सोचने में 1 1.5 2 साल लग जाते हैं. तो फिर जब नहीं होता तो फिर जाके like they end up doing jobs or like which are irrelevant, like maybe in the administration, admin something. So if you don't, if you maybe there are job challenges, a lot of job challenges. You don't get them, create them. It's like simple, like if you're not getting a job, create like 3 for others too. ठीक है, so ताकि वो वाला आपको एक फीलर भी आ जाएगा कि you get that confidence कि अच्छा ठीक है, I'm I created job for 3 people using the digital matters, using the the digital landscape, which is very getting wide day by day. So yeah. So before we end the session, can you speak a few wise words for entrepreneurs, especially? Uh, uh, you know, uh, the few points which are general, there are few points which will be like specific to entrepreneurs. The first is like you don't give up till it's like achieved, because like people what they do is कि आपने 1 1.5 2 महीने में रिजल्ट्स देखते हैं, कहते हैं नहीं यार ये अच्छा नहीं हो रहा, ठीक है. So don't do this, like wait for the right time, because everything takes time. You actually create that thing, you एक जो सर्कल बनता है, इस सर्कल के अंदर आपका बेसिकली बिजनेस या फिर आप हाईलाइट होने शुरू होते हैं, तो वो सर्कल की सराउंडिंग बनाने में टेक्स टाइम, ठीक है. सो गिव इट टाइम. फिर कुछ लोग ये भी एक चीज है कि क्या गिव इट टाइम में ऐसा नहीं हो सारा टाइम ही जाया हो जाए और बाद में पता चले कि वो कभी चला ही नहीं. सो डोंट डू दिस कि वो आप अनलिमिटेड टाइम के लिए भी नहीं. यार वो आज सेशन देखा था एक वर्ल्ड कॉल का, उन्होंने बोला था गिव इट टाइम, अब तो मैं टाइम ही देता रहूंगा. डोंट डू दिस. एक कट ऑफ टाइम होगा बेसिकली, बट वो कट ऑफ टाइम बहुत जल्दी ना हो. दिस इज द पॉइंट. पहला पॉइंट ये है कि आपने कट ऑफ टाइम एक रखना है कि यार ठीक है, इस वक्त तक मैं इवेल्युएट करूंगा कि सही है या नहीं है. इन टर्म्स ऑफ लाइक अब ये तो बड़ी बुरी बुरी वर्स्ट केस सिनेरियो वाली बात होगी. एक होगी बड़े अच्छे सिनेरियो में कि थिंग्स स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम स्टार्ट, इनिशियली बड़ा अच्छा सब चल रहा है सब, और बंदा बोल रहा है कि यार लाइक मुझसे आई एम एन एब्सोल्यूट जीनियस, मेरे जैसा तो कोई बंदा ही नहीं है, एंड लाइक आई अचीव लाइक सो मच इन दिस मच लेस टाइम. में कहाँ था. तो उसमें consistency is the key. I've seen people losing consistency when they get like they achieve things, और they achieve like जो उस वक्त की KPIs होते हैं, जो भी उनकी like achievement का जो भी मार्क उन्होंने किया होता है, सब तक पहुंच जाते हैं, and they start like lose हो जाता है. So the consistency goes low. तो उसमें यह है कि you have to be very consistent and you have to keep pace on. दूसरा
सक्सेस वाले फैक्टर में पहला पॉइंट जो बताया वो बेसिकली वर्स्ट केस सिनेरियोज में इन टर्म्स ऑफ लॉस व्हेन यू लूजिंग एवरीथिंग एंड यू नॉट गेटिंग टू द मार्क. ठीक है, सो यू कीप डूइंग इट टिल द कट ऑफ टाइम. अदरवाइज फिर आप तो रीस्ट्रेटेजाइज करें, go and come up with something else, like maybe like just a whole world out there. ठीक है. और तीसरा जो इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो मैंने पहले की बात में बताया. Don't wait to start something. Okay, if you're talking to entrepreneurs, don't wait to start. Like just start it from like paper. ऐसा ऐसा होकर होता है. You keep researching about it. You write like small pointers about it. You see के कौन कौन कर रहा है. अच्छा, लोग डायरेक्ट कंपटीशन को देखते हैं हमारे यहाँ. लाइक पीपल डोंट गो फॉर द इनडायरेक्ट कंपटीशन. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इनडायरेक्ट कंपटीशन एज वेल. इफ आई एम अ टी seller, if I have a brand which sells tea. So coffee is an indirect competition for me. Is an indirect competition. तो वो उसको लोग नहीं करते. अच्छा, मैं अगर कॉफी हूँ, if I'm like for instance glory jeans, uh, I'm thinking about my coffee competitors. I'm not thinking about like यार एक छोटू चाय वाला भी है, वो भी तो मेरा कंपटीशन somehow हो तो सकता है. somehow अगर कोई ना चाय पीना पसंद करता है ना कॉफी पीना पसंद करता है, and if he's going to just to socialize somewhere, तो फिर तो वो मेरा कंपटीशन है. फिर तो वो मेरा कंपटीशन लाइक कोई कोई ऐसे लाइक कैफे भी हो सकता है. बिकॉज जो पॉइंट था वो सोशलाइजिंग का था. कॉफी का तो है नहीं, डीप कॉफी लवर एंड लाइक कॉफी के लिए जा रहा है. तो ये वाली चीजें एंटरप्रेन्योर्स को भी देखनी होती, छोटे उसमें स्केल पे, कि यार मेरा इनडायरेक्ट कंपटीशन क्या होगा. डायरेक्ट के ऊपर बड़ी वर्किंग होती है, इनडायरेक्ट का पता ही नहीं होता, वही चोट पहुंचा देता है बाद में. तो हाँ, ये सारे फैक्टर्स हैं जो बेसिकली आई थिंक कि ये दिमाग में पहले होने चाहिए. या Okay. Thank you, Mr. Fahim, for this engaging and informative session. We and Work Hall would like to thank you and good luck for all your future endeavors. थैंक यू. Uh, थैंक यू. थैंक यू फॉर हैविंग मी.